Hello everyone, welcome back to Ansarkari. In today's video, we will be continuing with the newspaper series. And today we will be taking up the important topics from the newspaper of 28 August 2024. So first article here says Jan Dhan, 10 years and many milestones. So as the title suggests, it is the 10th anniversary of the Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana. So what are the major milestones or the major things that we have conquered under the scheme? तो प्रधानमंत्री जन धन योजना या फिर PMJDY ये एक फाइनेंशियल इंक्लूजन की स्कीम है ताकि और ज्यादा ट्रांसपेरेंसी और ज्यादा स्ट्रीमलाइन प्रोसेस हो of allocating money to individuals. तो it was launched by Government of India in 2014 और मेनली जो अंडर बैंक्ड और अनबैंक्ड पॉपुलेशन के लिए है उनके लिए इट इज इम्पोर्टेंट. की फीचर्स की बात करें तो जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन कर सकते हैं इसमें, फिर लाइफ इंश्योरेंस के रिलेटेड भी कवरेज मिलता है, फिर मोबाइल बैंकिंग और फाइनेंशियल लिटरेसी भी. तो इससे पावर्टी रिडक्शन भी होएगा और सोशल डेवलपमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ ओवरऑल. मेन when we talk about the distribution के how is it among the beneficiaries, तो total there are 53 crore the total number of beneficiaries, and the beneficiaries in rural and semi-urban are 35 crore. Urban metro में there are less, obviously nearly half of the rural and semi-urban, that is 17 crore. और फीमेल बेनिफिशरीज का भी एक अच्छा स्टेक है इसमें, दैट इज नियरली ऑफ 30 crores. तो more than half, if you see, or nearly half of the total beneficiaries. So very well it has also been able to cover the gender gap. तो important keywords की बात करते हैं तो अगेन फाइनेंशियल इंक्लूजन, डिजिटलाइजेशन, फिर इसके साथ ही यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस भी जो भी न्यूली रिलीज हुआ है टू एनहांस द क्रेडिट अवेलेबिलिटी टू द बेनिफिशियरीज. प्लस में जैम की जब हम बात करते हैं जनधन आधार मोबाइल, तो लिंकेज बिटवीन द आधार एंड मनी एंड इवन द मोबाइल नंबर, ताकि जो डॉक्यूमेंटेशन हो और जो actual beneficiaries है उन तक ही the service that is provided. All these points they become important. And when we talk about top 10 states by the number of beneficiaries, तो top में we have उत्तर प्रदेश, सबसे ज्यादा जहाँ पे beneficiaries है. Further we have Bihar, then West Bengal and so on. तो यानी मिडिल इंडिया में मोस्टली देर आर larger participation. Then later on, we also have eastern and southern cities like Assam, Karnataka, etc. इसके अलावा हम देख सकते हैं 36 लाख लोगों को रुपए का डेबिट कार्ड प्रोवाइड करवाया गया है. बैंक शाखा, बैंक मित्र, एटीएम या पीओएफ या ई कॉम से रिलेटेड जितनी भी बैंक सेवाएं किसी भी एक चैनल के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान की जा सकती है. 2 लाख इंश्योरेंस बेनिफिशरीज है और 10 लाख रुपए का ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज प्रोवाइड कराई जाती When Russia warns US of the World War III risk, so as we recently saw, okay, there have been growing number of attacks between Russia and Ukraine, or geopolitical tension even in the Middle East, it is going on. तो इसके लिए a major important factor can be the presence and the actual vigilance या फिर effectiveness of the regional institutions that we have formed. जैसे हम US led NATO alliance की बात करते हैं, तो all these groupings they become very important for the management. Otherwise, the forces such as Russia, जैसे रशिया का हमें इंक्लिनेशन दिखाई दे रहा है टुवर्ड्स चाइना एंड इवन चाइना सपोर्ट टू रशिया. So Iran also, who has particular ties with Russia and China. So this can prevent their intra support to each other's country so as to promote war. यहाँ पे रीजनल ग्रुपिंग्स का रोल आ जाता है मेनली. एंड यूएस विच वी कॉल द मोस्ट रिच एंड पावरफुल कंट्री, so it can
help in developing of peace treaties. No ban, Telegram may be held liable under the IT rules. So Information Technology Act 2000, and इसके अंदर ही we also have the CERT team, that is the Computer Emergency Response Team. तो यहाँ the issue is mainly कि Telegram को भी ban नहीं करा जा रहा है, but there have been several issues for its work. क्या क्या issue है? इसके ऊपर allegations है कि there occurs distribution of pornography content, exam paper leaks होते हैं, sale होते हैं fake SIM cards. Further, even जो money laundering, even that and drug trafficking, etc., that all occurs on this platform, or other illegal transactions. So all these allegations, they have led to the arrest of the CEO Pavel Durov in Paris. So French authorities ne currently they have arrested him. Or it mainly acts as an intermediate. जैसे जब हम बात करते हैं तो जो थर्ड पार्टी कंटेंट है इस प्लेटफॉर्म पर जो पोस्ट हो रहा है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी टेलीग्राम की नहीं रहेगी क्योंकि वो एक इंटरमीडिएट है प्लेटफॉर्म. इट इज जस्ट अ प्लेटफॉर्म जो कि चैनलाइज करता है. तो इस वजह से इट हैज अ सेफ हार्बर स्टेटस इन द सेक्शन 79 ऑफ द आईटी एक्ट. लेकिन अगर नॉन कंप्लायंस होएगा ऑफ ऑल दीज बेसिक areas, so then there can be issues regarding. So IIT Act becomes important here, and also India के लिए भी data privacy कैसे even the copyright violation, obscene content, इस सब के लिए भी it is currently being misused by people. So movies, web series are also available here. Further leaks और end-to-end encryption की जब हम बात करते हैं encryption की, तो even there the apps they are allowed to view, but only to the limit that they can keep a check कि whether such illegal activities they are taking place or not. Just even WhatsApp has this end-to-end encryption. Next, pathways to plug medical. तो सचिन सचिन आपका क्या कहना है टेलीग्राम की, जैसे बात अभी इतनी हमने डिस्कस किया, इट इज अ चैनल, इसके प्रोज एंड कॉन्स हैं. रशिया यूक्रेन वॉर के बाद फ्रीडम ऑफ स्पीच, उससे पहले भी. सचिन आपके हिसाब से भारत के लिए सस्टेनेबल सॉल्यूशन क्या होना चाहिए? टिकटॉक की तरह बैन होना चाहिए या क्या होना चाहिए? रेगुलेशन से इम्पोज की जा सकती है टेलीग्राम पर. आप कह रहे हैं रेगुलेशंस होनी चाहिए? हेलो. हाँ, अच्छा अच्छा, ओके ओके. प्रेरणा, आप बताइए. Yes, sir. Sir, again, banning cannot be the only solution because कहीं ना कहीं दूसरे जो platforms है उनको भी use करा जा सकता है फिर. Instead, it हम्म. better regulation itself कि क्या क्या content वहाँ पे जा रहा है and more पर है awareness. ऐसा इतना मुश्किल है, इतना इतना आसान है कि आप जो मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ जो डेटा हो रहा है उसको आप रेगुलेट कर पाओ, कंट्रोल कर पाओ, ऐसा पॉसिबल है? सर सेपरेट इंस्टीट्यूशंस फॉर्म करना इम्पोर्टेंट है एंड देन उनकी वर्किंग को चेक करना रेगुलरली. फर्दर कंज्यूमर अवेयरनेस भी इंक्रीज करना कि जैसे रिपोर्टिंग को ऑप्शन आता है चैनल्स के लेकिन लिए. अगर मनी लॉन्ड्रिंग की, आप क्रिमिनल एक्टिविटीज, मनी लॉन्ड्रिंग, एंटी टेरर, सीक्रेट, ये सब को आप कैसे करोगे? हाउ यू विल गेट टू द एंड यूजर? वो कैसे होगा? बताइए. यस सर. एंटी नेशनल एंड मिसयूज जो है, एंटी नेशनल और एंटी सोशल, वो कैसे होगा? तो हम इस पे चर्चा करेंगे अपने डिफरेंट सेशंस में. वी विल ट्राई टू फाइंड इनोवेटिव एंड ट्राई टू फाइंड साइंटिफिक एंड लॉजिकल सॉल्यूशन. आगे बढ़िए. यस सर. नेक्स्ट, pathways to plug medical education gaps.
So here this is regarding the demand and supply mismatch that occurs in terms of medical facilities itself. जैसे इंडिया का जो डॉक्टर टू पॉपुलेशन रेशियो है it has improved to 0.9 to 1000 और जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिकमेंडेशन है दैट इज 1 to 1000 लेकिन around 1/3 of the population is short of doctors and we have only 0.2 specialists per 1000 people. The shortage is mainly acute in community health centers जो कि ज्यादा crucial है in rural areas. तो यहाँ पे स्पेशलिटी के ऊपर फोकस करना इज इम्पोर्टेंट और स्किल ट्रेनिंग एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर और जो पुअरली लेवरेज प्राइवेट सेक्टर है लैक ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी यूसेज दे आर ऑल क्रिटिकल फैक्टर्स एंड एडिशनल चैलेंजेस क्या क्या है लो कंपेंसेशन एंड लैक ऑफ करियर पाथवेज एंड हाई अट्रिशन रेट्स in terms of nursing. So here this is regarding कि कैसे जो medical education है, it can help in plugging the gap regarding the medical facilities that are available to individuals. तो मेजर यहाँ पे बात हो रही है डिप्लोमेट ऑफ नेशनल बोर्ड सीट्स. तो ये सेंटर ने इंट्रोड्यूस करा था 1975 में जो डॉक्टर्स की शॉर्टेज है और टीचिंग फैकल्टी है उनके लिए. तो डीएनबी जो कोर्स है डिप्लोमेट ऑफ नेशनल बोर्ड ये एम्फोसाइज करता है ऑन प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एंड इवन आफ्टर पोस्ट ग्रेजुएशन it helps. So NAT Health shows that DNB has an additional demand potential of 7,500 seats in private hospitals with over 200 beds. This is just regarding the criteria. Further, National Board of Examination, it also awards the DNB postgraduate degree. So usko bhi, the guidelines, they must be tweaked to reduce the cumbersome process जिससे कि ज़्यादा penetration हो इसमें. चैलेंजेस की बात करते हैं तो अगेन इंफ्रास्ट्रक्चरल कंप्लायंस जैसे कि लैबोरेटरीज लाइब्रेरीज फैकल्टी स्टाइपेंड्स दे आर ऑल चैलेंजेस मेजरली इन द प्राइवेट हॉस्पिटल्स. तो इनका रिवैल्यूएशन इंपॉर्टेंट है सो एज टू इंक्रीज द नंबर ऑफ स्पेशलिस्ट. इसलिए पोस्ट ग्रेजुएशन पे ज्यादा फोकस मस्ट बी देयर. तो स्ट्रॉन्ग मार्केटिंग आर्म क्रिएट करना इज इम्पोर्टेंट and also addressing the concerns regarding infrequent assessment, delayed re-examinations, etc. And also regarding the safety of the work persons, क्या उनकी mental health है, even they must be, even that factor must be taken care of. For the time, the amount of time that they are spending during their course. Hub and spoke model can also be enabled small district hospitals में so as to offer the DNB programs जिससे कि ज़्यादा specialists they will be produced. Investment की बात करते हैं तो again FDI in higher medical education that will enhance the resources and supply pool. Technical proficiency जो है and also the infrastructure that can better infrastructure can be set up. इसके अलावा जब हम बात करते हैं ब्रेन ड्रेन की तो उसको रोका जा सकता है कि बहुत ज्यादा फीस होने की वजह से फिर इंफ्रास्ट्रक्चर कम होने की वजह से जो स्टूडेंट्स हैं जिन्हें एमबीबीएस करनी है वो अदर कंट्रीज में जाकर उज्बेकिस्तान यूक्रेन रशिया या फिर कनाडा जैसी कंट्रीज को चूज करते हैं. तो उसके ऊपर किस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की जा सकती है. अगर कोई प्राइवेट कॉलेज से एमबीबीएस करता है तो उसके ट्रेनिंग के लिए या फिर जो भी पीरियड होता है उसके लिए टियर 3 सिटीज में या फिर जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है उनके अंदर उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाई जा सकती है ताकि जो इनसफिशिएंटी देखी जाती है वो उसको पूरा किया जा सके. इसके अलावा जब हम टूरिज्म की बात करते हैं तो भारत में 3 तरह के टूरिज्म देखे जाते हैं. उसमें मेडिकल टूरिज्म जो है वो बूस्ट कर रहा है चाहे वो तमिलनाडु में हो चाहे वो राजस्थान में हो या महाराष्ट्र में देखने के लिए मिलता है. तो जब उसको प्रमोट कर रहे हैं तो उस स्तर पर किया जा सकता है कि किस तरह से जो स्पेशलिस्ट है उनको बढ़ाया जा सके और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डेवलप किया जा सके ताकि एफडीआई को इन्वेस्ट अट्रैक्ट किया जा सके और उसमें इन्वेस्टमेंट बूस्ट की जा सके. Thank you for that. Next, banking the unbanked. So Jan Dhan at 10,
Again, this is regarding the trinity that forms of JAM, UPI, and Unified Lending Interface, which was recently introduced. जिससे कि this will facilitate the consent-based flow of digital information, जैसे कि land records, etc., ताकि जो credit appraisal है, it becomes quicker and more efficient, especially for the smaller and rural borrowers. So then it is mainly regarding the Jan Dhan, which has its 10th anniversary this year, 2014 में it was launched. तो यहाँ पे the proportion of the banked adults, it grew from 30% in 2014 to 80% at present. तो यहाँ पे जो lack of universal credit है उसको address करना is important, जिसके towards this initiative is that is Unified Lending Interface. Further, when we talk about banked and underbanking or unbanking, so unbanking refers to that there is no bank account, whereas underbanking means that there is bank account, but the facilities, etc., the financial help that is received by the individuals, uske liye other sources are being opted rather than the banks themselves. So when we talk about small finance banks or microfinance, even they help if the rural people and even farmers specifically. So India's first digital public good in 2009, it solved the fundamental problem of identity. तो अगेन अगर हम लिंक कर देंगे लाइक द फोन नंबर, जैसे कि जैम में भी होता है, तो आधार को मोबाइल से and then with other document etc., and then उन सबको बैंक से लिंक कर देंगे, तो it will be much efficient, और जो there will be no intermediaries in this, and जो benefit है that will be received by the actual needed or the vulnerable section themselves. कोई लीकेज नहीं होएगा पूरे सिस्टम. So these are all the major benefits. और प्रधानमंत्री जनधन योजना, it also enabled eKYC, which made it possible to onboard new customers online. So know your customer KYC. These are all increasing efficiency and transparency in terms of transactions. In 10 years data की बात करें तो government has transferred 38 trillion rupees. Or direct benefit transfer, it also cut out middlemen and reduced leakages. Further, more financial inclusion can be done. यहाँ पे जो scope है. Next, what is P2P lending and who does it cater to? So P2P lending allows individuals to lend others through RBI regulated non-banking financial companies. तो NBFCs again इनको banking का status नहीं मिला होता, but there are such institutions which still provide the services that a bank provides. तो peer-to-peer lending ये अलाउ करती है दूसरों को लेंड करने के लिए थ्रू दीज NBFCs as platforms, जैसे यहाँ पे कि मैच कर सकते हैं लेंडर्स एंड बोरोवर्स. तो शॉर्ट टर्म फीचर्स क्या क्या है कि मेनली जो ऑफर जो शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स, जैसे कि मेडिकल इमरजेंसी, ट्रैवल लोन या रीपेमेंट ऑफ क्रेडिट कार्ड ड्यूज, होम रेनोवेशन, और ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं एज कंपेयर टू व्हेन यू बोरो क्रेडिट फ्रॉम द नॉर्मल बैंक्स, लेकिन स्टिल जो प्रोसेसिंग और डिसबर्समेंट है इट इज क्विकर, इसलिए दे आर प्रेफर्ड. अब यहाँ पे मेन इश्यूज और चैलेंजेस क्या क्या है, व्हाट द बैंकिंग रेगुलेटर. तो some platforms they were promoting P2P lending as an investment product with assets with assured returns. Further, interest rates may be they were higher. There was no cap on the interest rate जो कि lender charge कर रहा था. And recalling of loans before the stipulated time. फिर non-performing assets उनका increase होना और non-compliance with the disclosure guidelines. These are all the major issues that were seen here. तो transparency और compliance को improve करने के लिए better guidelines have been created. जैसे कि tenure linked assured minimum returns, liquidity options, etc.
The cross-selling of products, be it will not be allowed except for insurance products. So these are the major steps that are taken here. Vivek, you wish to add something? एनबीएफसीज को 1956 के जो कंपनी एक्ट है उसके अंदर रजिस्टर होना जरूरी है। इसके अलावा ये बैंक की तरह काम करती है, लेकिन बैंक की तरह जो जमा राशि स्वीकार करने की क्षमताएं होती है वो इनके पास नहीं होती। इसके अलावा अगर इनके पास 500 करोड़ के अप्रोक्स प्रॉफिट हुआ है तभी इनको उस कैटेगरी के अंदर ऐड किया जा सकता है। जब हम थर्ड इशू देखते हैं कि इनकी जो प्रॉफिट है वो 50 से 75% का अप्रोक्स होना चाहिए, 2 साल के अंदर देखा जाता है। वहीं जो बैंक्स की बात करते हैं तो उनके रेट जो है वो इंक्रीज और डिक्रीज होती रहती है, जिसकी वजह से जो उनके द्वारा लोन लिया जाता है वो ज्यादा होता है और उन्हें बेनिफिट होता है। वहीं जब एनबीएफसी की बात करते हैं तो रेट हाई होने की वजह से इनको प्रॉफिट कम होता है, जिसकी वजह से लॉस के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि प्रॉपर ना तो बैंक के अंदर ऐड होती है ना ही इस वजह से होती है आरबीआई की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग। Hmm. Next destination, Uttarakhand. So here this is relating to Uniform Civil Code. कैसे this Uniform Civil Code, it is promoting equality being applied in Uttarakhand. So State Foundation Day before November 9, Uttarakhand is on path of becoming the first state of the country since independence to implement this Uniform Civil Code. अब यूनिफॉर्म सिविल कोड है कि इट इज मेजरली अ प्रपोज लॉ इन इंडिया जो यूनिफाई करना चाहता है एज द नेम सजेस्ट जो पर्सनल लॉ जैसे कि एलिमनी, इनहेरिटेंस एक्सेट्रा among all the religious communities के उसके बेसिस पे there are not major differences here. Again exception में we have tribals majorly. अब इसके arguments in favor equality, social justice, for the better efficiency in terms of governance and administration, women empowerment, और against की जब हम बात करते हैं तो जो religious freedom है that will be a bit curbed या फिर channelized we can say, और cultural diversity that might also be hindered. Political polarization के cases भी यहाँ पे हो सकते हैं. So, what are the major benefits here? The unified growth. Again, social justice, they can perpetuate inequalities. और ensuring equal rights for women and children. तो adoption laws में standardization, further inheritance में, और जो economically lineage में whatever will be passed on, उसमें equality. Legal system also has this एस्पेक्ट कि प्रेजेंस ऑफ मल्टीपल पर्सनल लॉज वो कॉम्प्लिकेट कर देते हैं लीगल प्रोसीडिंग्स को और फिर कंफ्लिक्टिंग जजमेंट्स भी आते हैं। तो इससे सिंगल लीगल फ्रेमवर्क रहेगा फॉर ऑल सिविल मैटर्स, जिससे कि स्ट्रीमलाइंड और ऑल एफिशिएंट हो जाएगा द लीगल सिस्टम। सेम थिंग इज फॉर इकोनॉमी। Next, benefits of a uniform civil code for Uttarakhand's judicial system. Specifically, जो rights और obligations हैं, citizens they will get more awareness and understanding, जिससे कि better compliance होगा of law and quicker solving of cases. जैसे कि 5 crore pending court cases are there in our country. So quicker resolution of legal disputes. Anti-copying law. Again, as it boosts job creation. जैसे एग्जाम में हम देखते हैं पेपर लीक्स, and recently there was a bill also passed regarding the prevention of leaking of bills, leaking of examination papers and unfair practices during the examination. So implementation of this law has led to fewer exam delays. तो जो malpractices है they will be curbed here. Restoration of public trust that will happen, और effectiveness भी ज़्यादा improve होएगी with strict enforcement.
important aspects की बात करते हैं overall UCC के, तो equal rights for husband and wife, exclusion of scheduled tribes since they are much primitive and different or maybe sidelined from the mainstream society, legitimacy of children born in live-in relationships and also registration of the live-in relationships. फिर equal property rights, as I just mentioned, for both women and men. Uniform marriage age, which is 21 years for boys and 18 for girls. Equal rights on divorce, etc. Alimony, these are all the major steps taken here. So 10 glorious years of Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana. तो जब हम डिजिटल इंडिया मिशन की बात करते हैं उसमें भी इट विल हेल्प मोर फाइनेंशियल इंक्लूजन में, इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रॉस्पर करने के लिए इट कैन प्ले अ मेजर रोल. इससे इंक्रीज सेविंग्स, जो एक फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, that also will be enhanced since the individuals they will practice how to save, कैसे plan करना, increase access to credit, better employment. और जेंडर गैप को भी इट विल हेल्प इन ब्रिजिंग, एज वी जस्ट नाउ सॉ के नियरली 53 करोड़ में से there were 30 crore beneficiaries are women themselves, so nearly perhaps a bit more than half. So ensured positive social impact with drop in criminal rate, reduced alcohol and tobacco consumption. So these are all the social implications. Further, invest Madhya Pradesh to highest forest cover. Further, mining, etc. maybe. Gold mines are also present in Madhya Pradesh. The regional industry conclave, Gwalior. A convergence of history, legacy, and industry. To strengthening MSMEs, fueling regional growth. This is your Gwalior Fort. तो मेन फीचर्स क्या क्या है यहाँ पे? टू प्रमोट इंडस्ट्रीज, MSMEs, buyer and seller meetings, one-to-one meetings, thematic sessions. Key focus areas क्या क्या है? ITs, higher education and skills, tourism, rural, handloom, handicraft, and footwear industries. Global Investor Summit. Prerna, as you just mentioned, gold mines are also present in Madhya Pradesh. Can you mention the name? I don't remember the name, but there is one gold mine that is very famous, present in Madhya Pradesh. According to me, there are gold mines in Andhra Pradesh, Jharkhand, and Uttar. Prerna, it must be diamond mine. हाँ sir. But Yes. Mansi, there are silver mines in Rajasthan also, and maybe in minor mineral parlance there may be. So please cross check. Singrauli district में majorly it is present. Jabalpur, Betul in Madhya Pradesh. And regarding the diamond mine, very famous Panna district में it was there. Next, Bharat Biotech unveils oral cholera vaccine. So as we read के even polio में we have oral means of vaccinating. So similarly oral cholera vaccine. So abhi currently there is only one manufacturer, but now Bharat Biotech International has also launched oral cholera vaccine. Hilcol. Cholera. Yes, sir, cholera. So large-scale manufacturing facilities, they will be built in Hyderabad and Bhubaneswar. So again, self-reliance and और ज़्यादा promotion so as to prevent cholera. And Hilcol, that is the name.
तो हिलमैन लैबोरेटरी से लाइसेंस लिया, they have adopted the license to combat cholera. And it is administered orally on day 0 and day 14 and is suitable for individuals older than 1 year. Important scheme की बात करते हैं तो major Indradhanush scheme in terms of vaccination, major challenges in terms of vaccination, awareness के regarding, plus zero vaccination या फिर incomplete vaccination, and also targeting of even adults rather than just focusing on children and them. Mobile vans का भी use कर सकते हैं हम इसमें, which can help in vaccinating as a doorstep delivery. Next, how will you tackle air pollution in NCR in winter? SC asked the Chief of Air Quality Panel. The Supreme Court on Tuesday termed the Pollution Control Board of Delhi NCR ineffective and asked the Commission for Air Quality Management in NCR and adjoining areas. तो यहाँ पे CAQM का रोल आ जाता है. Commission for Air Quality Management, which is responsible for air quality management in the national capital and adjoining areas. So major when we talk about schemes, etc. steps, तो again यहाँ पे GRAP norms आ जाते हैं, Graded Response Action Plan, जिसमें के steps होते हैं कि according to the level of the air quality, there are curbs on traffic, etc. Further, FAME की हम बात कर सकते हैं, फिर भारत Stage 6 BS norms, and also the cafe that was recently introduced. These are all the major things that can be done for air quality. Further construction pay and vehicular emissions pay, there can be a proper check. Important role of Delhi Pollution Control Committee. Next, the invisible lives of sanitation workers who clean Mumbai's drains to keep it from drowning. So, यहाँ पे there are major areas के तो जो social effect है कि how this practice of manual scavenging, it goes on from generation to generation. And जो conditions है वो improve नहीं हो पाती. Then we also talk about the safety of such individuals. Further, किस time में and क्यों इनकी इतनी requirement है, what can be the alternative solutions? जैसे कि we can use machines या फिर even robots for this. And proper PPE kits, personal protection equipments, they can be used. Regarding the smell, etc. Law की बात करते हैं तो Prohibition of Employment as Manual Scavengers and the Rehabilitation Act 2013. So even smell, etc. say there are deaths that take place here. Just an example here is given of Shankara Colony, slum in Mumbai's Ghatkopar. It serves as a temporary home to thousands of seasonal sanitation workers. So seasonal sanitation workers, majorly when torrential rain takes place, तो तब they are required more क्योंकि तब पानी भर जाता है and और ज़्यादा cleaning is needed here so as to prevent the clogging etc. तो यहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम को और ज्यादा एफिशिएंट बनाने की बात कर सकते हैं. We talk about smart cities. Smart city ऊपर आ रही. According to the Ministry of Social Justice and Empowerment, the latest figures they show that there are 66,692 manual scavengers who've been identified across India, and majority of them they belong to the Dalit community because of again the social stigma which is associated Dalit community, specifically the subcaste. So we are seeing again this discrimination in not just in this case, but also in education, healthcare, and employment opportunities.
And definitely there is the health hazards which is associated, and the toxic gas which is released from the sewers is the hydrogen sulfide, so which is highly toxic, and it is even lethal also. So regulation one law which is mentioned here is the prohibition of employment as manual scavengers in the Rehabilitation Act 2013. So here the act states ki if there is violation, so there can be imprisonment of 2 years, fine up to 2 lakhs or both. But we see that there is lack of effective implementation, and here the role of local bodies is very, very important when it comes to the effective implementation of this act. They are themselves employing manual scavengers to clean the sewers. So again, this needs to be taken into account. And Supreme Court judgment clearly in 2014, it stated that manual scavenging is completely prohibited, and they should be employed in alternative livelihoods, in alternative employment sectors, we can say. And they said ki compensation should also be provided of up to rupees 10 lakhs for the families, particularly for the people who died during such uh, cleaning exercises. Then we have National Safai Karamcharis Finance and Development Corporation. So this provides financial assistance and skill development programs so that these people, they again, they have the skills which can be used in other sectors. And definitely in Swachh Bharat Abhiyan, Clean India Mission 2014 also, there also we talked about elimination of open defecation, convert all the dry latrines to flush latrines. So again, reducing the need for the manual scavenging. But again, we are seeing there is social acceptance, deep-rooted caste system, which is again creating a challenge, societal challenge. There is underreporting of the cases, then implementation gaps despite having the law, even the Supreme Court judgment completely prohibiting this act, Inhumane Act. Still the things, they remain unchanged on the ground. So solutions, as you just mentioned, can be the use of machines, as we are seeing in case of Delhi, but those machines are really expensive as of now. And again, जो भी हमने National Safai Karamcharis Finance and Development Corporation की बात करी, the funds can be utilized from that aspect also. And we have one Namaste scheme also, which is again which is providing the solution to this problem. So it is the National Action Plan for Mechanized Sanitation Ecosystem. So this was launched in 2022 to eradicate manual scavenging through complete mechanization. And also the SMR, Self-Employment Scheme for Rehabilitation, manual scavengers. And यहाँ पे other challenges की जब हम बात करते हैं, तो one is regarding the self-awareness and the initiative which they must take, the cleaners themselves. जैसे कि BMC issues tenders for desilting work. So they say that we have instructed contractors not to let workers enter drains and tanks and follow all safety rules, such as wearing gloves and boots. But if they don't listen to us, what can we do? So strict norms यहाँ पे होने चाहिए. It must be a compulsion rather than just a suggestion and advice. And also there must be proper records. जैसे यहाँ पे there is also sanitation activists. Pragya Akhilesh, they mention that when there is no record of a person's existence, anyone can make them do anything. So trafficked children, they are also used for this work, but without records. So similar to this kafala system, maybe maids, etc. Online also, e-market is created for such selling, etc. So this also must be prevented.